Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Dr. Muhammad Junaid Ghori, and today I'll be talking about literature review. Let me connect you with the lecture that we had in our previous class. Actually, we are talking about the research procedure, the steps that are involved in the research process. In our previous lecture, we talked about the selection of topic, selection of problem, and then converting it into a topic, and what is the criteria for a good topic, and what could be the possible sources for a good topic. Today, we are going to talk about the next step involved in the research procedure, and the next step is the literature review. In this lecture, we will be talking about what is a literature review, why do we need it, and what is its importance in a research process. So before we get into the details, let me tell you what is a literature review. Okay, I mean, in simpler terms, you can say that there is some literature that you have to review. So what is that literature and how we review it? And why do we review it? This is what we are discussing today. Now, let me give you an example. I mean, let me explain this topic with an example. Suppose you want to conduct research on the construction of Islam and Muslims in the Western media. So as I've told you in the previous lecture, in the topic section, that you have to narrow down your topic. आपने अपने टॉपिक को इतना सा बनाना है, ऐसा बनाना है जिस पे आप रिसर्च कर सके, बहुत ज्यादा ब्रॉड ना हो. So if we talk about the construction of Islam and Muslim in Western media, so is it possible for you as a researcher that you can conduct research on the whole Western media? That is near to impossible. I mean, not near to impossible, actually it's impossible, because West, there would be millions of channels and news outlets, and you cannot conduct research on all those media outlets. So what you have to do is you have to narrow down the scope or narrow down the area of Western media to particular news channels, particular newspapers, particular magazines, or particular periodicals. So what you have to do is Western media को आपने narrow down करना है. तो आप क्या करेंगे कि आप फर्ज करें, आप ये कह रहे हैं जी कि you want to find out the construction of Islam and Muslims in Australian media. Okay, I'm using this word simply Australian media because this is my PhD area. Now, in Australia, there are hundreds and thousands of newspapers, news outlets, digital media, electronic media, conventional TV channels. So are you able to conduct all those research on all those media outlets, news outlets? No, not at all. So again, you have to confine yourself or narrow down yourself to particular outlets. So what you do is Islam and Muslims in Australian media, colon or full colon, you say exploring, analyzing the Australian and the Age. ये दो न्यूज़पेपर्स के नाम है. तो अब आपने क्या किया कि अपने आप को वेस्टर्न वर्ल्ड से ऑस्ट्रेलिया में लेके आए, और ऑस्ट्रेलिया से अब आप अपने आप को कहां पे ले आए हैं, दो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स में. तो अब another step, another important step of narrowing down the topic. The Australian is being published since the mid of 18th century. Okay. I mean, all these, both of these newspapers are being published in centuries. So what particular time frame you are conducting research on? I mean, किस टाइम फ्रेम के दौरान आप चाह रहे हैं कि आप इस्लाम और मुसलमानों की कंस्ट्रक्शन चेक करेंगे? तो ये अब आप अपने टॉपिक में तो बेशक इसको मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको डिलिमिट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर और अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, और वहां पे आप मेंशन करेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम है जिस पे आप जो है वो research conduct करेंगे. And then again, in each newspaper there is a variety of contents. There is a variety of contents. News is there, pictures are there, editorials are there, columns are there, features are there. So what you are going to analyze? newspaper के किस content को आपने analyze करना है.
तो वो भी आप अपने आप को डिलिमिट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, राइट। अब आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि इन दिस पर्टिकुलर एरिया, आई मीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम इन ग्लोबल मीडिया, how many researchers have conducted research, what they have done, how they have done, and what they have found out. उन्होंने क्या किया, कैसे किया, किस वक्त किया, और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी। ये सारे का सारा दोस्तों आपका लिटरेचर है। ये क्या है, आपका लिटरेचर है। जैसे आपको याद होगा जब हम टॉपिक सिलेक्ट कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि आप प्रोफेशनल जर्नल्स या रिसर्च समरीज या रिसर्च जर्नल्स में से डेटा कलेक्ट करेंगे, तो दिस इज द डेटा यू आर कलेक्टिंग, दिस इज द लिटरेचर यू आर कलेक्टिंग, एंड यू विल रिव्यू इट for what, I mean what others people have already done in the area where you are conducting research in. जिस एरिया में आप अब रिसर्च कर रहे हैं उस एरिया में आपसे पहले लोगों ने मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे रिसर्च कंडक्ट की है, कब कब की है, कहां कहां की है, कैसे की है, और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी। ये सारा बच्चों आपने आपकी एज ए रिसर्चर, दिस इज योर प्राइमरी बेसिक एंड मैंडेटरी responsibility that you have to collect possibly all the relevant literature related to your topic or problem. Then you review it. Reviewing it means that, as I mentioned in previous minutes, that a researcher sitting in Australia like Halim Rani, he has conducted research on Islam and Muslims construction in 24 ये एक चैनल का नाम है, ये एक प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल का। तो he conducted this research in 2008 and then in 2010. Now you go and find out what did Halim Rani do, उसने रिसर्च कैसे कंडक्ट की, क्या उसके क्वेश्चन थे, उसने कौन सी मेथोडोलॉजी अप्लाई की, यानी कैसे किया, और फिर उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, और वो अब आपकी स्टडी के साथ कैसे रिलेट करती हैं। सो दिस इज इन सिंपलर टर्म्स यू कैन से दिस इज द लिटरेचर रिव्यू इन सिंपलर टर्म्स। if we go to the book, particularly this Dominic and Mimmer's book, तो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि रिसर्चर्स do literature review for particular guidelines. गाइडलाइंस क्या हैं कि ये रिसर्च, इस तरह की रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हमें क्या क्या डूज हैं और क्या क्या डू नॉट्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। अब ये रिसर्च जो है पर्टिकुलरली लिटरली अगर हम देखें तो ये जो लिटरेचर रिव्यू है आपको हेल्प आउट कैसे करता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च हैज बीन डन इन द एरिया, जो आपका एरिया है उसमें किस किस्म की रिसर्च हुई है, क्या क्या रिसर्च हुई है, उससे आपको अपनी लाइन सीधी करने में, अपनी लाइन ड्रॉ करने में आपको आसानी होगी। व्हाट हैज बीन फाउंड इन प्रीवियस स्टडीज, आई मीन व्हाट इज देयर कंक्लूजन्स, व्हाट दे हैव फाउंड आउट, उनके कंक्लूजन्स क्या हैं, उनके कंक्लूजन्स को देख के आपको एज्यूम करने का मौका मिलेगा, हाइपोथेसिस ड्रॉ करने का मौका मिलेगा, हाइपोथेसिस डेवलप करने का मौका मिलेगा, गाइडलाइन मिलेगी। व्हाट इज हाइपोथेसिस, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन आवर नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिसर्च प्रोसीजर। सो आपको लिटरेचर रिव्यू ये भी बता रहा है कि आपके एरिया में कितनी कैसे रिसर्च हो चुकी है और उन्होंने उसमें से निकाला क्या है, उनके कंक्लूजन्स क्या हैं। What suggestions do other researchers make for further study? This is very important. Suppose when I was conducting research, I read Halim Rani. I read his recommendations, his suggestions for further study. I mean, he suggested that if you want to conduct research in this particular area, I mean, in construction of Islam and Muslims in Australian media, you should focus on newspapers also. When I found out that there is somebody who conducted research like Nahid Kabir, the researcher conducted research on the Islam and Muslims construction in print media. Then I found out the researcher recommended that when you are conducting research on print media, you should consider the political ideology of the newspaper. Suppose you are conducting research on two newspapers,
You don't take two newspapers from the same political ideology. Otherwise, you would be in a difficult situation to take inferences or infer the meanings. If there are two newspapers from two different political ideologies, then you would be able to compare them. Their findings, their construction can be, their coverage can be compared. तो ये एक और अच्छी रिकमेंडेशन है. सो लिटरेचर रिव्यू से आपको क्या मिलता है दोस्तों? आपको अच्छी रिकमेंडेशंस मिलती हैं जो आपको आपकी फर्दर स्टडी में हेल्प आउट करती हैं. नेक्स्ट इज व्हाट हैज नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड. अब डिलिमिटेशंस होती हैं हर स्टडी की, और उसके बाद रिकमेंडेशंस होती हैं. उन रिकमेंडेशंस और डिलिमिटेशंस को देखिए कि क्या रिसर्च नहीं हुआ, क्या चीज इन्वेस्टिगेट नहीं हुई. अब आप क्या कीजिए, those areas are considered as research gap. This kind of the answer of this question, that what has not been investigated, the answer of this question is research gap for you, and this is coming to you through literature review. अब आपको literature review आपको ये research gap बता रहा है कि इस particular area के अंदर ये कमी रह गई. अब आपको चाहिए कि आप इस area पे research conduct कीजिए. That would be helpful. Why? Because this will increase the existing body of knowledge. रिसर्च का मकसद ये है, हमारी बेसिक रिसर्च का मकसद ये है कि एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा किया जाए. अगर आप सेम चीज ही दोबारा कर लेंगे तो वो तो रेपिटेशन होगी और वो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी होगा. देन हाउ कैन द प्रपोज्ड स्टडी ऐड टू आवर नॉलेज ऑफ द एरिया? आई हैव जस्ट मेंशन्ड. यू सी, once you conduct a research on a topic which has not already been investigated, this will obviously increase the existing body of knowledge. What research methods were used in previous studies? I have just mentioned. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हलीम राणे ने कंटेंट एनालिसिस किया, फॉर इंस्टेंस नाहिद कबीर ने कंटेंट एनालिसिस किया. अब उनको उनसे अगला जो स्टेप मैंने किया, एक रिसर्चर ने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस किया. कंटेंट एनालिसिस की मजीद सोफिस्टिकेटेड फॉर्म पे आप चले गए. नो, यू एज ए रिसर्चर, you suppose want to conduct research in the same area, you say that these methods have already been applied. Now let me apply another method and try to find out whether the findings would coincide and relate with the findings of other people who have used different methods or not. अगर वो सेम आ जाती हैं तो ये एक बड़ी खूबसूरत एडिशन होगा आपके एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर. So my dear students, this is how literature review can help you in streamlining, in narrowing down your topic, in developing a good hypothesis, in developing good research questions, and it would help you to not to waste your energy and time on a research that has already been done. So literature review एक इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेप है आपकी पूरी रिसर्च के अंदर, आपके रिसर्च प्रोसीजर के अंदर. एंड सम पीपल से दैट द लिटरेचर रिव्यू इज द बैकबोन ऑफ योर research process. Okay, so when you start conducting research in particular area, on particular issue or problem, this is your primary, basic and mandatory responsibility, okay, to explore, to find out, to dig out possibly all the research all around the world that has been conducted on your area of research. Okay, I hope this lecture would help you. I hope this lecture would help you to conduct literature review, how to conduct literature review when you are conducting your research during your thesis at MS or PhD level. If you have any question, you can ask those questions, you can pose those questions here, and I'll be happily responding on those questions. Thank you very much. Assalamu alaikum.